Hello, my dear students. How are you? I'm sure that you must be doing very well. Let us discuss, understand, and enjoy our today's topic. And the topic is acceleration due to gravity. इससे पहले जो मैंने अपना वीडियो डाला था उसमें मैंने आपको ग्रेविटेशन के बारे बताया था और मैंने ये कहा था कि every body in this universe attracts every other body with a certain force known as the gravitational force or simply gravitation. और ये फोर्स क्यों होती है? ड्यू टू द masses of the body. और दूसरी चीज़, दिस फोर्स इज़ ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. और फिर मैंने आपको बताया था कि दिस फोर्स इज द वीकेस्ट फोर्स इन नेचर बट इट प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन कंट्रोलिंग द एंटायर स्ट्रक्चर ऑफ द यूनिवर्स. सो देयरफॉर दिस फोर्स इज वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट इन द यूनिवर्स. नाउ I also told you that what is gravity. तो मैंने आपको कहा था कि अगर दुनिया की कोई दो ऑब्जेक्ट हम ले लें उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और सिंपली ग्रेविटेशन. लेकिन अगर हम एक बॉडी फिक्स कर लें कि वो हमने हमेशा अर्थ ही लेनी है और दूसरी बॉडी जौन सी मर्जी बॉडी ले लो तो उनमें जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको हम बोलते हैं ग्रेविटी. दैट मीन्स ग्रेविटी इज ए स्पेशल केस ऑफ ग्रेविटेशन इन विच one of the two bodies must be earth and the second body may be any other body lying on or near the surface of the earth. It is due to gravity that all bodies fall towards the center of the earth. And the definition of acceleration due to gravity is that the uniform acceleration with which a body falls freely towards the center of the earth is called acceleration due to gravity. It is denoted by the symbol small g. Now, let us find an expression for acceleration due to gravity. And for that, suppose a body of mass small m, ये body है, इसका mass है small m, is lying on the surface of the earth. And mass of the earth is capital M, which is of course equal to 6 into 10 raised to the power 24 kilogram. And radius of the body is capital R and equal to 6400 किलोमीटर. और इसको हम 1000 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर बन जाएंगे और मीटर बनेंगे 6.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6 मीटर. सो दैट इज द रेडियस ऑफ द अर्थ. नाउ इफ कैपिटल F is the force due to gravity acting on the body, then according to Newton's second law of motion, capital F will be equal to capital G into capital M into small m over capital R square. अब यहाँ पे कैपिटल G है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर. और इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों कहते हैं? यूनिवर्सल कांस्टेंट इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू दुनिया में पूरी यूनिवर्स में हर जगह सेम रहती है, इसमें कोई चेंज नहीं आती. और कैपिटल M इज़ द मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज़ द मास ऑफ द बॉडी. अब जो कैपिटल R जो है ये डिस्टेंस होता है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द टू बॉडीज़. और यहाँ पे वो डिस्टेंस होना चाहिए डिस्टेंस ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ प्लस रेडियस ऑफ द बॉडी. यानी कि ये होना चाहिए कैपिटल R प्लस स्मॉल r. लेकिन आपको पता है कि रेडियस ऑफ द अर्थ इज 6400 किलोमीटर
और उसकी तुलना में जो हम बॉडी ऊपर रखेंगे जिसका रेडियस स्मॉल आर है वो बहुत छोटा होगा. दैट मीन्स आर इज लेस देन कैपिटल आर. सो therefore instead of writing capital R plus small r, we can neglect small r and write r square. Now this is the force due to gravity acting on the body. Now you know that whenever a force acts on a body, there is some acceleration produced in the body, and therefore if g is the acceleration produced in the body, that is if g is the acceleration due to gravity, then according to Newton's second law of motion, force is mass into acceleration. Mass m और ये यहाँ पे कितना आ गया g, which is the acceleration due to gravity. Now let us compare equations 1 and 2. दोनों की लेफ्ट हैंड साइड f है, राइट हैंड साइड भी बराबर होनी चाहिए. So therefore we can say that mg equal to gmm over r square. This small m goes with small m and we are left with small g equal to gm over r square, which is the required expression for the acceleration due to gravity. अब देखो यहाँ पे मास ऑफ द बॉडी कितना था, स्मॉल m, और वो g के फार्मूले में नहीं आया. दैट मीन्स, please listen to me very carefully. This is very important point. The acceleration due to gravity is independent of the mass of the body. That means it does not depend upon the mass of the body. So body का mass चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो, बॉडी छोटी हो बड़ी हो जैसी मर्जी हो, उसकी जो acceleration due to gravity है that will be the same. So therefore we can say that all bodies irrespective of their masses fall towards the center of the earth with the same acceleration, and that acceleration is g equal to, let us put the values of capital G, capital M and small capital R. So g equal to capital G is 6.67 into 10 raised to the power minus 11. Capital M is 6 into mass of earth, which is 6 into 10 power 24. Capital R is radius of earth, which is 6.4 into 10 power 6, and square of that so many meter per second square. And if you calculate this, it will come out to be 9.8 meter per second square. So therefore, remember, the acceleration due to gravity on the surface of the earth is about 9.8 meter per second square. Now we have a numerical. Numerical is calculate the acceleration due to gravity on the surface of the moon. Given that mass of the moon is 7.4 into 10 power 22 kilogram and radius of the moon is 1740 kilometer. So let us solve this numerical. Let acceleration due to gravity on the surface of the moon equal to gm. ये जो छोटा m मैंने डाला, this stands for moon. अब फार्मूला क्या है g के लिए, g equal to gm over r square. So therefore gm will be, कैपिटल g तो आना ही आना है क्योंकि मैंने आपको बताया ये है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. इट्स वैल्यू एट ऑल प्लेसेस इन दिस यूनिवर्स इज द सेम. तो चाहे हम अर्थ पे लें, चाहे मून पे लें, चाहे कहीं और जगह पे लें, कैपिटल जी ने सेम रहना है. तो कैपिटल जी तो वैसे ही आ गया, m की जगह मास ऑफ मून आ गया, m मीन्स मास ऑफ मून, और rm, r की जगह क्या आ गया, rm स्टैंड्स फॉर रेडियस ऑफ मून एंड स्क्वायर ऑफ दैट. नाउ कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10 रेज़ टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, और मून का मास हमें दे रखा उसने 7.4 इंटू 10 पावर 22 किलोग्राम, और इसका रेडियस हमें दे रखा उसने 1740 किलोमीटर. इसको 1000 से मल्टीप्लाई करके मीटर बन गए और ये बन जाएंगे 1.74 इंटू 10 पावर 6 मीटर. अब ये वैल्यूज एक नंबर इक्वेशन पुट कर लो तो जी आ जाएगा, जी एम आ जाएगा 6.67 इंटू 10 पावर माइनस 11 इंटू 7.4 इंटू 10 पावर 22
over 1.74 into 10 power 6 square of this, so many meter per second square. Now if calculate it, then it will come out to be approximately, ये जो symbol है ना, this is for approximately equal to 1.63 meter per second square. So remember, acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1.63 meter per second square. Now, let us find the ratio of the acceleration due to gravity on the surface of the moon and on the surface of the earth, that is gm over ge. Now you know that gm is 1.63 meter per second square and ge is 9.8 meter per second square. This meter per second square goes with meter per second square and we are left with 1.63 over 9.8. Now I can write right hand side as 1 over 9.8 divided by 1.63. So therefore gm over ge equal to 1 over 9.8 over 1.63. Now if you divide 9.8 by 1.63, it will come out to be equal to 6. So therefore this ratio is approximately equal to 1 by 6. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो आ गया gm equal to 1 by 6 ge. That is acceleration due to gravity on the surface of the moon is about 1/6 of the acceleration due to gravity on the surface of the earth. अब इसके ऊपर बेस्ड कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. उनमें से एक क्वेश्चन है, आपको पता कि देयर इज नो एटमॉस्फेयर ऑन दी मून. तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि वाई इज देयर नो एटमॉस्फेयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, तो उसमें आप एक लाइन पे आपके लेवल के हिसाब से, 9th क्लास के लेवल के हिसाब से आप जवाब दे सकते हैं कि इट इज़ बिकॉज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी on the surface of the moon is very small. It is about 1/6 of the acceleration due to gravity on the surface of the earth. बाकी इसका जो डिटेल में आंसर है वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे. So that's all for today. I hope you must have enjoyed my lecture. Please like, share and subscribe to my channel. Thank you very much, my dear students. Stay blessed.